सो हेलो एवरीवन, आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही रहेगी। लेट मी सी लाइव पे मेरे को मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? सो हेलो एवरीवन, आई होप सबको मेरी आवाज़ चलो परफेक्ट, मेरे को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। सो आज के लाइव स्ट्रीम पे मैं एक्चुअली ट्राई करने वाला हूँ फायरबेस स्टूडियो। मैंने आज देखा कि फायरबेस स्टूडियो करके एक नया टूल मार्केट में आया है, गूगल ने रिलीज़ किया है, जिसके अंदर हमें देखने मिलेगा लाइक वेब डेवलपमेंट यूजिंग एआई। तो मुझे ट्राई करना था, मैंने सोचा कि लाइव पे करते सो दैट के एक छोटा सा ट्यूटोरियल टाइप भी बन जाएगा, एक्सप्लोरेशन भी हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक्स मेरे को भी पता चल जाएगा कि कैसा दिख रहा है एंड एवरीथिंग। सो हियर आई एम विथ एआई एंड फायरबेस। So yeah, just before getting that, let me just go ahead and set up anything else which I might need. So I'll be back in a jiffy. So let's start exploring Firebase Studio. ठीक है? So मैं यहाँ पे आ जाता हूँ exploring Firebase Studio. ठीक है? So मैं यहाँ पे आ जाता हूँ exploring Firebase Studio. Yep. So let's get started. देखते हैं क्या क्या है इंस्टॉल्ड हमारे लिए। एनिमेशंस बहुत मस्त है यार। आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, रिसीव। आई वुड रिकमेंड, अगर आपको नहीं चाहिए ईमेल अपडेट्स तो ये बंद कर देने का। एंड रिसर्च स्टडीज़ तो चलो ठीक है, दैट्स गुड। ओके, हेलो हिमांशु, व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड। फिर यहाँ पे प्रोटोटाइप एन ऐप विद एआई एंड स्टार्ट कोडिंग विद एन ऐप, न्यू वर्क स्पेस, रेपो, एंड दिस आर ऑल द डिफरेंट टूलिंग्स विच वी कैन यूज़। यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग एन एप्लीकेशन। सो following, let's start creating a portfolio of sorts. Let's try to make a resume out of this, कि क्या हम resume बना सकते हैं इसका। ठीक है, so उसके लिए अपने को एक लेना पड़ेगा, prompt बनाना पड़ेगा। create a website, create a website which is basic, create a portfolio website for a professional developer primarily working on generative AI. So let's prototype with AI. Let's see वो क्या देता है हमें create करके. So with AI, as far as what I know, Firebase Studio AI के through हम लोग को पूरा का पूरा एक UI बना के दे देगा, and then we can with AI make modifications to it. So probably कुछ interesting देखने मिल सकता है हमें यहाँ पे. So prototype this app. सो यहाँ पे हम देख सकते थे अगर कोई दूसरी चीज़ें रहेगी तो। एंड इट स्टार्टेड कोडिंग, बहुत सारे फाइल्स बना रहे हैं एंड होपफुली हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस। एंड इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग, एडिंग, रिमूविंग फाइल्स। जो
आपको ग्रीन कलर दिख रहे रहेंगे ये पूरे के पूरे सिस्टम में, दोज आर एक्चुअली एडिशंस एंड रेड आर एक्चुअली रिमूवल्स. इट्स लाइक गिट का यूआई डिजाइन एंड एवरीथिंग. So it created this. So switch to code. Okay, let's see इसने क्या किया है. Okay, so ये rename नहीं करते हैं. So यहाँ पे we can code it and यहाँ पे magic में जाते हैं. So probably we can actually see how it is working and what it creates. Let's see. So hello everyone who joined. So blank screen क्यों है? Let me see. Does it create? Okay, it is still working on. So ओके, इसने एक वेबसाइट बनाया है, TSX फाइल है, मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट में कर रहा है वो चीज़. ठीक है, इंटरेस्टिंग. आप रे कितने सारे फाइल्स बना रहे हैं. नेक्स्ट जेएस, अरे माय फेवरेट. इनफैक्ट आजकल तो मैं नेक्स्ट जेएस पे ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ. सो फेयर इनफ, नेक्स्ट जेएस इज़ परफेक्ट फॉर मी. तो अभी तक इतनी फाइल्स बनाई है एंड स्टिल इट इज़ वर्किंग ऑन इट. बाय द टाइम ये क्रिएट करता है वी कैन एक्चुअली गो हेड एंड वॉच सम वीडियोस एज वेल, अगर अपने को चाहिए. तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट दिस, द सीक्रेट गूगल यूआरएल फॉर द गुड सर्च वर्जन. आई डोंट नो व्हाट दिस वाज. ओके, बट बिफोर दैट यहाँ पे आ गया है. ओके, इंटरेस्टिंग. योर नेम, ब्रीफ बायो, स्किल्स, इंटरेस्टिंग, जनरेटिव एआई एंड एवरीथिंग. ओके, देन देर आर प्रोजेक्ट्स. लवली, यही मेरे को सबसे बेस्ट लगता है व्हेन इट कम्स टू पोर्टफोलियोज जहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स मेंशन हो. एआई प्रोजेक्ट इनसाइट्स, जनरल इनसाइट्स, एंड देन देर इज दिस कॉन्टैक्ट पेज, गेट इन टच. ओके, इंटरेस्टिंग. एंटर योर जेमिनाई एपीआई की to generate. Just generate an API key for me. So ये probably directly एक API की मेरे को generate करके दे देगा AI Studio के through, hopefully. एंड आई लव डार्क मोड. तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमारा probably डार्क मोड में कन्वर्ट करना रहेगा इस वेबसाइट को. सो देखते हैं क्या ये लाइव स्ट्रीम में हम लोग एक पूरा का पूरा यूआई बना सकते हैं जो केटर कर सकता है हमको. ओके, ठीक है. एडिट द, ठीक है, की हो गया है. द फर्स्ट इटरेशन ऑफ योर prototype is ready. Try it out in the previous window and describe the changes you would like to see below. Want to make changes directly? Hit the code button on top to switch to the code editor or click below. ओके, ठीक है. सो फॉर द टाइम बिंग हम लोग नो कोड पे रिलाई करेंगे सो दैट के वी डोंट राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एंड ये पूरा का पूरा खुद से करके दे दे. सो आई विल ट्राई टू मेक इट डार्क थीम. ठीक है. सो ये क्या करेगा, उसको डार्क में कन्वर्ट कर देगा. सो यहाँ पे वही है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जहाँ पे आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आप गुड प्रॉम्प्ट्स दो, सिंपल प्रॉम्प्ट्स दो. ठीक है. सो डार्क मोड में कन्वर्ट कर दिया है. अब मैं एक एक सेक्शन को फॉलो थ्रू करता हूँ. सो वेरी स्टार्ट, आई वॉन्ट सम सॉर्ट ऑफ अ फैंसी नेविगेशन मे बी. No, let me revamp the skills section. No, let me add social media below the description. Below the bio, have placeholders to add my LinkedIn, GitHub, X, and Instagram IDs. Enter. So यहाँ पे वो प्लेस होल्डर दे देगा so that we can actually add our social media handles as well. So if someone wants to reach out to us, they could actually do that. Interesting enough. ठीक है, perfect. यहाँ पे आ गए हैं. Lovely. The animations is pretty good. And make the color theme orange because I love orange. Naruto का theme color भी है. So I would prefer orange wherever possible. And yes, it will change all the
codes, and you can see how much changes they are doing. And if, whoa, no, 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 no. Keep the text accent color orange, and the background should be as before. Let's see. यहाँ पे हो सकता है कि एआई मात खा सकता है ये वाले स्पेसिफिक सेक्शन में, क्योंकि इन दिस वेरी स्पेसिफिक सेक्शन चांसेस है कि काम नहीं करेगा ये चीज़। चांसेस आर हाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल्स में डाला हुआ है। हाँ, सी बैकग्राउंड उसने चेंज नहीं किया, एंड इनफैक्ट उसने पूरा का पूरा यूआई भी वियर्ड करके रख दिया है। ठीक है, लेट मी रिमूव द टेक्स्ट इनपुट्स फॉर द social media handles, and then I'll change background to black. ठीक है, सो दैट कि वो बैकग्राउंड प्रॉपरली वापस आ जाए। परफेक्ट, यहाँ पे आ गया है। एंड सिंस मैंने सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने बोला, तो उसने हवर एनिमेशंस में चेंजेस नहीं किए, तो परफेक्ट, जो मुझे चाहिए था वो हो गया। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आई कैन नाउ गो अहेड एंड यहाँ पे एक एरर भी है। फनी इनफ देयर आर एरर्स, ये सॉल्व नहीं करते। ठीक है, सो अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड नाउ आई विल रीवैम्प द स्किल सेक्शन, एंड आई वांट स्किल सेक्शन इन चिप्स। चेंज द स्किल सेक्शंस टू शो चिप्स। चिप्स एज इन ऐसे छोटे छोटे चिप्स टाइप, ऐसे सर्कुलर वे में रहेगा, जहाँ पे सारे डिटेल्स लिख के आ जाएगी कि ये स्किल्स हैं हमारे पास, rather than having complete blocks. Chips would be a better approach here. हाँ, perfect. See, they are very interestingly sleek. And now we can add. So I'll add create multiple sections in the skills section. Some examples are, some are um, programming, web development, cloud, AI, DevOps. ठीक है, focus on GCP skills. सिंस मैं GCP में मोस्टली मेरे पास अभी एक्सपीरियंस है, सो आई हैव आस्क्ड इट स्पेसिफिकली टू क्रिएट GCP रिलेटेड स्किल्स, एंड जो मेरे लिस्ट में नहीं रहेगी वो मैं निकाल दूंगा, और रहेगी वो मैं ऐड कर सकता हूँ, सो इट्स नॉट अ बिग डील। लेट्स सी, वेब डेवलपमेंट परफेक्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस, HTML CSS, अरे परफेक्ट। देन वी हैव AI में जनरेटिव AI, टेंसर फ्लो, पाइथन। ठीक है, it's like a proper segue ke when you are creating your AI models yourself, TensorFlow is very helpful. Perfect. Then we have DevOps में Docker, Kubernetes and CI/CD. Okay, perfect. So यहाँ पे then we can add basic frameworks. Stylize the skills section to make it more aesthetic, because like it's very plain and boring right now. So let's ask it to stylize it and see how it does that. So okay, logos add कर दिए हैं, छोटे छोटे icons which might help. Okay, add some more
style and character to the section. ठीक है. So it should do something more interesting. The more clear and precise things you would ask, उतना like predictable output आएगा. And जितना आप non predictable चीज़ें पूछोगे, like for example, I just gave it, okay, do something, so it will just try to do something rather than giving you a predictable output, is what I would say to be more accurate. ठीक है. So now we have this, and now we can go ahead and jump back to projects. And यहाँ पे we have title, we have a brief description, we have some ये मेरे को in the projects cards project card, add place for showing the skills used, so that we can show के हमने कौन सा languages या तो फिर चीज़ें यूज़ की थी while making this, rather than just having nothing. ठीक है, it added. And yes, skills used में we have the card thingies, and rather than the links, I would rather say buttons. Instead of links for demo and code, use button as button, so it looks more professional. So यहाँ पे we are giving actually very precise चीज़ें कि like change the links to buttons so that it knows what to do, and now you can actually predict what the output might be. So this is where the predictability might come in, that it will give you demo and code. See, now there is predictability. And now since there is predictability, I can actually even go further, make the buttons span the entire card. Fifth, half and half, to just be more precise, but I would not recommend adding that specific brackets, but okay, let's see how it does. So it would be interesting to see what changes it would do. Okay, perfect. उसने add कर दिया, but it still kept the older ones. Remove the full card buttons. ठीक है. I don't want those buttons. And in the meantime, let me see what the error is actually. Hydration failed because, okay, hydration error है. ठीक है, hydration error is fine. वो तो चलता रहेगा. ठीक है. Demo and code. ठीक है. And now AI project insights. I don't know what this is. Generate insights. Project. Enter the project details to generate AI insights. No. Remove AI insights section and add. What should we add? Do you guys have any ideas what we could add as our thoughts combine? We have skills, we have projects, we have education, and we have professional experience. So let's add professional experience. ठीक है. So it will actually remove that section and add a new section entirely. So it is doing its thing, or file changes, page.tsx. Why cannot I see? Interesting. Let me rewrite. Remove the AI project
insights and add professional experience. Enter. So यहाँ पे it should now remove one section and add another, which I actually want. So that should be interesting to see. It's a bit slow, but yeah, it takes time, of course. Get in touch. Okay, professional experience, job title one, company, skills used, details. Okay, lovely. Show it in a timeline view. So timeline view is like कि कहाँ से कहाँ पे गए थे from start to finish. So that should look more fancier, I would say, to be precise. Fancier might be the right word here. Okay, it's more fancier than anything. But ठीक है. So it will start creating, changing. I'm really curious कौन सा cards use कर रहे हैं Vish? Okay, it actually made the changes. So see, now there is this job title one, job title two. It tried creating a timeline view, but the UI didn't match well. So make it section based and not card based, and remove the timeline view, because since it is, let's keep the timeline view and see what it makes, because this doesn't look good. This is weird. So we need to come up with something which might work for us. It is doing its thing. So probably we'll see the changes happening pretty quickly. In the meantime, let me reply to some chats. Dun, dun, dun. Office work all the time. Office work. There is a lot of office work to do. Any which ways. Coming back to this, it is still doing its thing. But it's interesting. Like now you don't have to code, and it will do the coding for you, and you just have to mention what you need to change. And detected a error, and it will try to fix the error itself as well. Let's see if it can. I hope it should. Otherwise, the whole purpose of the studio would be meaningless if it cannot resolve a code. But why does it need so much changes to just make a single like error fix? What is the error though? Error source page TSX line number 40, parsing ECMAScript source code failed. Why? Why did it even fail? रिटर्न किया है, दैट इज करेक्ट. अनएक्सपेक्टेड टोकन डिव एक्सपेक्टेड JSX आइडेंटिफायर. फाइल का नाम क्या था? TSX है. ठीक है, करेक्ट है. डिव के बजाय JSX आइडेंटिफायर चाहिए था. इंटरेस्टिंग. क्या हुआ भाई? डोंट टेल मी इट एक्चुअली वेंट इन अ लूप. आई oh okay. ना, it didn't. इंटरेस्टिंग. एरर क्या है लेकिन ये? एरर इज page TSX source app page TSX. Let me just go there. Let me just go there myself. Let me see what is happening there. Hello, Haris. Are you calling aliens? Yes, I am calling aliens. I feel now alone, sad and alone here.
But I'm thinking, yaar, it cannot actually, like, I was trying Firebase Studio, which you can see here, and उसने error create किया, and now it cannot solve that error. So I'm seeing कि अपन code देख के कुछ कर सकते हैं. See, let's see. It's very slow, yaar. I actually thought it would be a bit faster. Okay, ठीक है. So we are in source. We should be in app, and there should be page.tsx. And here use client is correct. यहाँ पे भी Gemini. Okay. So Gemini chat भी है to fix errors. What is even Firebase Studio? Like what it does? Okay, let me explain again. So we have this new tool called Firebase Studio. So I'll just go back out. So studio.firebase.google.com, and here you can just with a prompt create a website or an app, whichever you like. So here I was creating a portfolio of mine. So if I go back inside, it will actually create a portfolio for me, and I don't have to write a single line of code. It will do it for me. मुझे बस prompts देने हैं. Single few prompts, and it will keep changing however I want. And then I can just make my own portfolio. So AI developer making that AI. So I was making this and it actually went to an error. So अब मैं वही error fix करना चाहता हूँ. So let me go back and try to fix it again. AI को दिया है, it should do it. I don't know what is the problem. Yeah, it's free of cost. Like we have the limits, like we have Gemini API key which we need to be mindful of. But yeah, most cases you should be it should be enough for you to actually create websites. Like खुद का portfolio बनाना या 3-4 websites से आराम से बन जाएगी. And वैसे भी daily limits पे रहता है, so it's quite alright. And ये error क्यों दे रहा है? It's in line 40. Let me just go ahead and check. इतनी देर से मस्त कर रहा था, फिर उसने वाट लगा दी. हाँ, लेट मी जस्ट गो बैक जस्ट अ सेकेंड. पहले मेरे को एक देखना है कि ये एरर क्यों आ रहा है इतनी देर से. मैं इतना अच्छा चल रहा था, मस्त एआई ने किया इतना सब अच्छा अच्छा, एंड नाउ इट इज़ लाइक कि मैं नहीं चलेगा. इट्स माई अब मेरे को नहीं चलना है, अब मैं चलना ही नहीं चाहता. तो इट्स इंटरेस्टिंग बट ठीक है. लेट मी सी, अगर मैं ही उसको लाइक फिक्स कर दूँ तो एटलीस्ट वी कैन एक्चुअली कंटिन्यू द डिजाइनिंग यूजिंग एआई. So yeah, like AI is not always correct. Sometimes it makes mistake. Sometimes it just completely weirds out the entire thing. But yeah, you actually get something out of it, which you can actually work upon. So that's the best part of it. That's the beauty of it. So I hope ये जल्दी load हो जाए so that we can actually try. My presence brings error. Yes. In the meantime, let's just try it again. Since इसको time लग रहा है. So I'll just create. Do you have any idea, Haris? What should we try? What should we make? What website do you want me to make? A portfolio or something you have in your mind, which we can create. So give me a prompt. I'll add it. We'll make that. In the meantime, let me see. So रिटर्न हो रहा है, करेक्ट है. यहाँ पे ये भी करेक्ट है. Oh, why are there two written statements? Skill chip. Okay, skill chip है. Then we have things export default. So if you have any make anime key. Let's try it. Let's try it. Let's just try. Create a anime streaming website similar to Anime Kisa. I don't know how many people know Anime Kisa to begin with. And we are exposing that site. Wow. So in the meantime, यहाँ पे error देखना है मेरे को, क्या error है. So far I don't think so there is an error. So far it looks good. No red marks, no red, apart from the first one.
हम्म, इंटरेस्टिंग. In fact, it refers to the right bracket as well. Plus मेरे को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है issue. Let me try asking to fix the error once. Otherwise, we'll read the code completely from start to finish. In the meantime, we'll prototype this app as well. दोनों try करेंगे. So fix the error. Let's see if it can fix the error, or else we'll have to actually figure it out ourselves. ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट बना देगा. एंड इन द मीन टाइम लेट्स सी ये क्या ये फिक्स अभी भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. I based on how it is working, I doubt now. इट्स इंटरेस्टिंग. लाइव स्ट्रीम पे एटलीस्ट एरर्स दिख रहे हैं. अगर इसका वीडियो रहता तो सारे के सारे एरर्स कट कर दिए रहते. जस्ट द लाइक टाइटल वुड बी के मेक योर फैब्यूलस वेबसाइट विद एआई विदाउट कोडिंग. एंड कुछ नहीं देखने मिलता उसके अलावा. जस्ट फुल फ्लेज्ड वीडियो. ओके ठीक है, इसको नहीं चलना ही नहीं है इसको. अनएक्सपेक्टेड टोकन डे JSX आइडेंटिफायर. ठीक है, लेट मी जस्ट ऐड द मेक चेंजेस नाउ. आई गेस दैट शुड बी द आइडियल सिनेरियो. यार ये बार बार चैट क्यों ओपन कर रहा है जेमिनाई का. आई डोंट यूज जेमिनाई चैट. आई फील लाइक यूजिंग चैट इज ओके, बट द थिंग इज एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यू शुड नॉट बी इट्स लाइक फुल फ्लेज्ड उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ. दैट शुड नॉट हैपन. एप्लीकेशन एरर क्लाइंट साइड. वाह Haris, I feel like you came in with a lot of errors, as you mentioned. दोनों तरफ errors है, errors ही errors है. Okay, created, but it is giving console errors. Hydration is fine यार. Hydration तो ठीक है. Was error while loading. Error generating the key. Oh, is it that my API key का tokens expired? Might be. Might be. Let's see. But before that, hmm, fix the error. Since टोकन एक्सपायर हो गया तो मे बी ये वर्क नहीं करेगा. हाँ, लेट मी जस्ट फिक्स दिस वन एज वेल. इसको क्या इशू है मेरे को देखना पड़ेगा. लेट मी जस्ट फुल फ्लेज रिमूव दी. व्हाट द हेक इज इट सो बैड. यार आई डोंट वांट टू टर्न दिस इनटू मी रैंटिंग अबाउट दिस टूल, and I feel like this is gonna be the thing which is gonna happen based on how I am seeing things. नहीं कर रहा है भाई, नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है ढंग से. मत कर यार ऐसा, मैं सच्ची रेंट करने लग जाऊंगा. ठीक है. ओह, नाउ कैन इट टेक. ओके, सो उसने कोड में कहीं पे तो प्रॉब्लम की है. हाँ ईश, मेरे को पूरा कोड रीड कराएगा क्या ये. प्लीज डोंट टेल मी यार. यार नो कोड का वाट लगा देगा ये. दिस माय ऑर्डर. आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो. कोई मैसेज करे तो पता चले. मैसेज करेगा तो पता चलेगा. आई डोंट नो. बट इन द मीन टाइम यार, यार this was supposedly should be no code, and now I'll have to see each and every line to figure out कि कहाँ पे error है. Do you get it how bad it is? And see here, यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है. यहाँ पे तो error ही नहीं हो रहा है ठीक से. भाई साहब, like
कहाँ पे आ गए भाई? I was so hopeful that this would be such a good thing to be like see, and this turned out to be hell in a few minutes. But let me see, मैं कोई section उड़ा के ठीक कर सकता हूँ क्या सीधा? I don't want to make much changes right now. It should be probably after the project showcase section. Yeah, it should be ideally here जहाँ पे error आया रहेगा. How do I know? क्योंकि last मैंने इधर ही changes कराया था. So नहीं यार, नहीं भाई साहब, why is it so bad? इतना लैग क्यों है इसमें? बंद कर दे. अरे रुक रे यार, लेट मी फिगर दिस आउट यार. दिस इज इंटरेस्टिंग. आई एम नाउ क्यूरियस टू नो क्या चल रहा है. कितना अच्छा चल रहा था स्टूडियो, एंड इट इज लाइक कि अब मेरे को चलना ही नहीं है. एट विच सेक्शन इट डिसाइडेड के आई नॉट वर्क एंटायर. व्हाट? ओके. इज इट इन द प्रोजेक्ट शोकेस? नो, इट्स इन द इंट्रोडक्शन. ओह, इज इट इन द इंट्रोडक्शन? हम्म. Yep, it was in the introduction section जहाँ पे वो break हुआ. Wow, skills. But save, and now let's see. Go ahead and see the UI if there are any updates. हाँ, so okay, तो इसने सिर्फ projects दिखाया. Let me go back. अगर I can just control Z the entire thing. No, no, wait. The better approach would be just go here, and now we can continue where we left off and make the website here only. It is taking a lot of time to actually do things. So at least I know one thing for sure. It's very slow. It's very slow, very slow. Slower than anything I could think of. Aish. Dun, dun, dun. I guess there should be actually a video only. Let's end this. This is not good. This is not supposedly working the way it should have been. Yeah, it should have created a good website. Yeah. Hopes थे मेरे, hopes खराब हो गए. It actually destroyed all of my hopes, I feel, in a single shot. Shattering hopes is its forte. हाँ ना, it's like shattering hopes. Like I felt ke like Firebase Studio, one of my actually colleagues mentioned it to me, and they were like, "कि भाई amazing है. It allows you to create such good UIs." And here I have tried some simple things and it broke. Or it's just me. मेरे को prompts लिखने नहीं आता है क्या? But ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक है. I guess this should be it. But thank you for watching. Yep, skill difference. Anything else? और कुछ?
But thank you so much everyone who watched. Maybe next time थोड़े prompts ready करके रखने पड़ेंगे so that it doesn't fall apart and it works like I do at my work. Making it so that it doesn't break when it is actually used. रुक सकता हूँ if you have something to say, if someone wants to talk, or we have something to watch. We can watch something interesting as well. There is a lot of things to watch. जेमिनी करते हैं अभी और क्या. इसने तो धोखा दे दिया भाई. ये तो होने से रहा. इसने तो पूरा का पूरा ऐसे मूड खराब कर दिया. I had so much hopes from this. So much. And it all vanished in the blink of an eye. I should be saying all this thing? I don't know. But ठीक है. Last try. अगर ये लोड होगा 2 मिनट में तो ठीक है, otherwise we'll end this. कुछ नहीं रखा है इसमें. कुछ नहीं रखा. Have you seen Naruto mobile animation Chinese game? नहीं यार. What is that? Naruto mobile animation. No, haven't seen it, bro. Haven't seen it. Ha, I'll see. Let me play then. Wait a second. Let me play, let me play, let me play. Just give me a second. भाई कॉपीराइट ना आ जाए, मेरे को बस यही डर है. ठीक है, let's try. Naruto mobile animation. This one? Harris, this one? इसी की बात कर रहा है तू? Yes or no? Should I play it? Should I not? Okay, let's try. Let's try. ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? Copyright आएगा. It's okay, let's figure it out. If it gives a copyright, we'll face it. 無力なやつめ Damn, bro. 無意味だ Bro, भाई. 圧倒者集中天 Captions. हिंदी क्यों दे रहा है भाई कैप्शंस? इतनी भी अच्छी आइज नहीं है मेरी. इंग्लिश ये इंग्लिश टू मराठी व्हाट? जस्ट इंग्लिश. हाँ. 一戦 हाँ, so true. Katana with Obito with katana is so true. Fire arrow. 燃え尽きろ The animation quality is super good. And the classic Obito look. The classic Obito look. いいだろう What? Bhai, the animation, bro. Bro, fire. 生と死紙一重の差だ痛みはない
一瞬で終わる。はあ。 Hey, was this a Chinese studio making this? भाई crazy भाई crazy भाई crazy भाई एनिमेशन भाई मजा आ गया अरे इनफैक्ट अभी टू बी हीरो एक्स जो आया है दैट इज आल्सो सो गुड लाइक द एनिमेशन क्वालिटी इट हैज इज प्रीटी टॉप नॉच मजा आया वो भी देख के लाइक पीपल आर वरीड के भाई चाइनीज एनिमेशन टेक ओवर ना कर ले इंडस्ट्री द वे इट इज गोइंग भाई साहब they should actually make a good anime out of all these things yaar they have that skills these are pretty good these are pretty good I would watch it. Oh, you are watching it. Arey, perfect. Yeah, I'm also watching it. Yeah, interesting. Yeah. In fact, the first episode had a very good cliffhanger. It had a very good cliffhanger. It had a very good cliffhanger. वाह coming back to this इसने लोड तो किया है create a portfolio for a web developer. Let's give it a last chance. Redemption arc. AI का भी redemption arc आ गया है. This is the time it will redeem itself. हाँ ना, it like the Chinese drama has a lot of good cliffhangers. Like they know when to stop. They're like curiosity की वाट लगा दो सामने वालों को. They should wait for a week and they're like क्यों ही wait करना है. वैसा हो जाना चाहिए. Like, crazy. And yes, back to square one. It created everything we wanted back again. And it gave us the professional experience, projects, skills, perfect projects, add education, and contact us sections. And this is how it was actually looking before as well, in some sense or the other. And now you can see how it looks. Harris, this is how it was looking actually. Like it was pretty similar to this only. So education is here, projects, contact us. Korea should animate their own manhwa too. Tragedy like the beginning after the end. हाँ यार, what happened to beginning after the end? I genuinely don't know क्या हुआ उसके साथ. मेरे को तो समझा ही नहीं क्यों चालू किया उन्होंने. It was a tragedy. It was a pretty bad tragedy. They should have not animated that. In fact, with solo leveling, they had to like make two audio versions, one just for Japanese people, while the other just for the rest of the world, so that they understand ke Sang Jinwoo is Sang Jinwoo and no one else. And they don't have to think about the politics about Japan, Korea being inverted to being Korea, Japan. वाइस वर्सा ना वो नहीं था अच्छा है हम लोग के लिए एटलीस्ट दे मेड दैट गुड फॉर अस सो हियर contact me blah 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 stuff we have your name skills ai professional experience education projects create a section for transferable skills let's see if there is anything called as transferable skills do you have any ideas what should we change in the website? Maybe this could be our actual portfolio after this as well. AI generated portfolio. It made a whole awesome resume website. Yes, it would. In fact, we can ask it to modify it a bit further as well. So, see, so it created skills, so thai transferable skills, communication, problem solving, teamwork, leadership, time management. Perfect. Add animations. Let's see. Do you have anything you want me to add into this, like a prompt or some section or something? So we can add that.
It actually worked in our favor. Redemption arc काम किया. So now it has evolved into its new form. Don't you think that? And voila, it should have created and it's loading. Please don't tell me loading animation पे ही अटक जाएगा. Oh, you can draw. Damn. हाँ, okay, it loaded. ठीक है. Modernize the UI. Yeah, comeback is real. Yes, it is actually real. It made a very good comeback. Let's see how modernized it could make mm, creative grounds. Okay, what did it do? Barely anything. Okay. क्या करना चाहिए अभी? If I were to make this my own, yeah, create a small underline like around 25% of the title below the section titles. Let's see. Like for colors, this is sort of a minimalist layout, I would say, which it is creating. Like a minimalistic kind of a UI. ओ भाई साहब कलर कुछ ज्यादा ही कलरिंग हो गया. मेक इट डार्क थीम भाई. नहीं 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 नहीं. मेरी आंखें खराब हो जाएगी इस हिसाब से. बट वही है, द वे यू आस्क थिंग्स, द वे यू प्रोग्रेस, द वे इट वुड एक्चुअली टर्न आउट टू बी. सो better you can explain, better it would do. Make the text color white and the background color black. Wow, I have to literally specify that how bad it is. But the fact is, it can do this much. It's a big deal. It's a big deal. Like it can do this much. It reminds me of Claude. Claude का जो UI था. It is back to what it was. ठीक है. Add logos beside the skills to add more character and depth. Adding some depth to it. हाँ ना यार, it added white color. It was so bad. Like I was like, क्यों कर रहा है ये चीज? ठीक है. What it would do now? हम्म 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 हम्म. कितना टाइम लेगा ये? कितना टाइम लेगा? गेमिंग. Super Mario Maker 2 is pretty amazing, I would say. I love watching it. I wish I could play it later. Someday. Huh. Did it do what I asked it to do? It didn't.
Very good. Did not do what I asked it to do. ठीक है. For all the skills and skill chips, add their logos or icons. Last try, and then I guess we should call it a day. It's been long, but thank you, Aris. It was amazing. It was fun. मजा आया. कुछ रहेगा देखने के लिए तो बता दे. We can watch that. Else we can end this. अगर इसने कर लिया तो well and good. नहीं किया तो भी ठीक है. Growing stage, learning things. इतना भी कर लिया तो बड़ी बात है भाई. Someday it would actually do something better, something more refined, clear. Error reaching server. Okay. Is this the end of an era or end of the stream? Indicating कि भाई सर्वर नहीं पहुंच रहे हैं भाई. हम ही बोल रहे हैं आपको कि आप जा सकते हो. मत ही रुको. आप सटक लो. Based on how it is functioning, I feel like that's the case. ठीक है. I guess this is how it will end. कॉपीराइट आया या नहीं आया बता. अरे डेफिनेटली ब्रो. नहीं आया तो विल डू इट अगेन. आया तो भाई फिर जाएगा. फिर और वाट लगेगी. ठीक है. चलो. आई गेस दिस कॉल्स फॉर द एंड ऑफ द स्ट्रीम एज वेल. के भाई एरर रीचिंग सर्वर इसको भी नहीं इंटरेस्ट है आने में लगता है. दे आर लाइक तुम जाओ. हमें नहीं रहना है इधर पे. चलो. थैंक यू सो मच हारिश. थैंक यू सो मच एवरीवन हु वॉच्ड. हैड अ लॉट ऑफ फन ब्रेकिंग थिंग्स टू बी प्रिसाइज. चलो. सी या.